पीठ में छुरा भोंकना। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। ये शुरुआती लाइन आप लोगों ने बहुत बार सुनी होगी, यार तुमने मेरी पीठ में छुरा भोंक दिया, यार तुमने मेरे साथ गलत कर दिया। इसका जो एक्चुअल मीनिंग है, एक्चुअल सेंस है, वो आज हम लोगों को पता चलेगा। क्योंकि ब्रूटस जो था एक्चुअली जूलियस सीजर का बहुत अच्छा दोस्त था। कैसियस वाज आल्सो अ फेलो मेट एंड एवरीबॉडी प्रेजेंट were actually very close to Caesar intrinsically. But अभी जैसे हमने प्रीवियस पार्ट में देखा कि they all conspired and have killed Caesar सक्सेसफुली। अब यहां से मैं पिक करने वाला हूं फ्रॉम द एग्जैक्ट मोमेंट जहां पे सीजर को स्टॉप किया गया है, वहीं से स्टार्ट करेंगे। मैंने दो पार्ट में वीडियो इसलिए ब्रेक किया था बिकॉज दिस सीन का जो ये वाला पोर्शन अब जो हम एट लेंथ बिगिन करने वाले हैं, ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बोर्ड पर्सपेक्टिव से। तो इसलिए मैंने इस हिसाब से इसको ब्रेक किया हुआ है। ठीक है, पहली चीज ये समझ में हमको आ गई। दूसरी चीज कि इसमें आपको एंटनी की ब्रिलियंस एज अ मैनिपुलेटिव पर्सन और ब्रूटस की एक्सीलेंस और थोड़ी सी नेग्लिजेंस भी मैं कहूंगा, क्योंकि कैसियस वाज very troubled by Mark Antony, but Brutus did not pay much attention to Antony. Later Antony is going to become somebody who is going to be a thorn in Brutus and Cassius's side and who is eventually going to lead to their downfall. Octavius Caesar को ट्रेन और एस्टैब्लिश करने में भी मार्क एंटनी का ही सबसे बड़ा हाथ है। तो आज हम लोग वहीं से पिक करने वाले हैं, फ्रॉम द मोमेंट सीजर स्टैब्ड, वहां से फिर क्या हुआ एंड व्हाट ऑल इज गोइंग टू अनफोल्ड राइट आफ्टर सीजर्स असैसिनेशन। तो चलिए बिगिन करते हैं। पहले बिगिन करने से ऑब्सेशन का ऐप डाउनलोड कैसे करना है, ये ऑब्सेशन ऐप सर्च करेंगे, ऑब्सेशन एंड एंट्रेंस हब के नाम से मिल जाएगा। शुभम सर ने, हमारे जो फाउंडर है, उन्होंने बनाया है। एंड्रॉयड और iOS दोनों पे अवेलेबल है। और यहाँ पे आप इसको ओपन कर लेंगे तो इसके फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में यहाँ पे आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा जो जो आपके लिए नेसेसरी है। तो हम लोग आज यहां से बिगिन करने वाले हैं कि कैस्का स्पीक हैंड्स फॉर मी एट एज कैस्का स्ट्राइक्स द अदर्स राइज अप एंड स्टैप सीजर। तो यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो के बाद वाली जो लाइन है, ये पूरे प्ले की सबसे इंपॉर्टेंट लाइंस में से एक है। क्या है वो लाइन? वो लाइन है एट टू ब्रूटे देन फॉल सीजर। अब इसका यहां पे बहुत सारा मीनिंग है। कैसे? एट टू ब्रूटे का पहला मतलब यू टू ब्रूटस। अब जूलियस सीजर अफेक्शनेटली यूज्ड टू कॉल ब्रूटस ब्रूटे। ओके, Brutus, being considered one of the best friends of Caesar, is also involved in this attack. And now Caesar is seeing Brutus raise his knife on him and stab him. So he is saying, "तुम भी Brutus, then fall Caesar, then Caesar shall die." Then Caesar के जीने का कोई point नहीं है if the best friend of Caesar is also stabbing him, is also involved in the attack of Caesar's assassination. Then Caesar shall fall. In many interpretations of the history itself, कहा जाता है कि Julius Caesar was actually giving up a good fight to the assassinators of his own. But when he saw he was being attacked by his best friend, who is Brutus, all the will to fight in him vanished. So that is the reference point of it. That is how you should interpret it. Right? You to Brutus, then fall Caesar. Now Cinna starts shouting, "Liberty, freedom, tyranny is dead. Run hence, proclaim, cry it about the streets. Liberty, freedom, and tyranny is dead." So dictatorship, which was about to be inculcated in Rome, is dead. Run hence, मतलब जाओ बाहर, be hurried about this, proclaim, claim about this. What do you claim about? Cry it about the streets that liberty, freedom, and tyranny is dead. We are free Romans once again. Cassius, come to the common pulpits and cry out liberty, freedom, and enfranchisement. अब कुछ लोग जो कॉमन पल्पिट्स हैं, पल्पिट्स मतलब टाउन के एरियाज होते थे वेयर देयर वर पेडेस्टल्स, जहां पे लोग खड़े होके
कॉमन पब्लिक को एड्रेस करते थे. द नोबल पीपल यूज्ड टू डू दैट. अब what is Cassius saying? जाओ उन common pulpits में, gather around the commoners and tell them that we are free, that we are that we have liberty, and we also have bought enfranchisement. Brutus, people and senators, be not affrighted. See, the brilliance of Brutus is shown here. People and senators, be not affrighted. Now they have actually done a very vile and a gruesome thing. They have murdered a senator inside a senate house, which is considered to be sacred and holy grounds where you cannot do bloodshed. Usually, in every place where you are going to go, and if there is a senate house or if there is a higher body like Lok Sabha, Vidhan Sabha, if you are there, bloodshed amongst the politicians is not allowed. It is considered very vile. Even if you want to do that, you have to do that outside, not inside the Senate house. So they have murdered people inside, murdered not people, but Caesar inside the Senate house. So what is Brutus doing? Brutus is calming the audience down because they have just witnessed such a gruesome activity. There is going to be adrenaline in every individual. So he is trying to calm the common public down. Why? Because then it could mean that these people will attack the assassinators of Caesar, and that will lead to the downfall of their own. So he is trying to firstly negate the vicious or viscera there is in the atmosphere. Fly not, do not run away, stand still, yahi khade raho. Do not be in a hurry, do not run away, do not be hurried about it, be not impulsive. Stand there, stand still, be patient for a moment. Ambition's debt is paid. Ambition's debt is paid. अब हमने सीजर को नहीं मारा है. Why we have killed Caesar? Because he was ambitious. So we have killed ambition itself. Caesar was the epitome of ambition. Caesar was the most ambitious man. We have killed ambition itself. Casca, go to the pulpit, Brutus. Brutus, now it is time for you to go to the pulpit and address the commoners. Decius and Cassius too. And Cassius tumhara bhi. Brutus, where is Publius? Now Brutus is asking, where is Publius? Here, quite confounded with this mutiny. है ना? Publius is right here. Quite confounded, meaning confused with this mutiny. Metellus, stand fast together, let some friends of Caesar should chance. अब Metellus is being very precautionative in this way. He is saying कि यहीं खड़े रहो, stand fast together, एक साथ एकजुट होके खड़े रहो. If by chance कोई Caesar का दोस्त हो या फिर somebody who is very close to Caesar should stand in their way and try their chance. Brutus, talk not of standing, Publius, good cheer. Now Brutus is saying, talk not of standing, कोई जरूरत नहीं है ये करने की. Publius, good cheer. Publius, everything is okay. There is no harm intended to your person. There is no harm that is going to be intended to you, nor to no Roman else, nor to any Roman else. We only wanted to assassinate Caesar, and that we have successfully achieved. So tell them, Publius, or Publius, you should tell everybody that. And leave us, Publius, lest that the people rushing on us to do your aid some mischief. And हमको छोड़ दो यहाँ पे. Leave us be. Do not stand with us. Why Publius should not stand with us? Lest that people rushing on us. Why are people rushing on us? Because they have killed the military general of the city. Should do your aid some mischief. अगर हमारे पे आते हुए लोग should attack you, your age is not well, it will do some mischief, you will not be able to fend them, you will not be able to defend yourself. Brutus, do so and let no man abide this deed but we the doers. है ना? Do so and कोई और आदमी को इसके लिए abide करने की कोई जरूरत नहीं है, but we the doers, जिन्होंने ये deed की है. All but the conspirators exist. सारे लोग चले जाते हैं, but the conspirators stay. Cassius, where is Antony? Now he's asking for whom? Mark Antony. Trebonius fled to his house amazed. He ran away to his house. How? Amazed. He was very shocked.
Men, wives, children stare, cry out, and run as it were doomsday. Now, Trebonius is telling that men, wives, and children, everybody is in a frenzy as doomsday has occurred, as the world is ending. Caesar was that level of a calamity in a sense. Caesar was that level of a influence in Rome. Brutus. Fates. Erase. So now everybody is in a frenzy, everybody is here and there, everybody is running around, and nobody has an answer to why what happened. Correct? Brutus. Fates, we will know your pleasures, that we shall die, we know this, but the time and drawing days out that men stand upon. Pleasures, fates, we all know your pleasures. Fate तुम्हारे प्लेजर्स को हमको बहुत अच्छे से रूबरू है. फेट तुम्हारी जो प्लेजर है वो हम बहुत अच्छे से जानते हैं. दैट वी शैल डाई वी नो, हम लोग मारे जाएंगे हमें पता है. दिस बट द टाइम, बट हमारा टाइम आएगा. एंड ड्रॉइंग डेज आउट, और लेकिन हम तब तक अपने दिन गिनेंगे और अपनी लाइफ को एक्सटेंड करेंगे. दैट मेन स्टैंड अपॉन, में हम लोग एज मेन वी विल स्टैंड अपॉन दैट. Why he that cuts off 20 years of life cuts off so many years of fearing death. Now Casca is saying, जो 20 साल की अपनी उम्र खत्म कर ले, वो 20 साल मौत से डरना खत्म भी करेगा एक साथ. What is he trying to mean? When you are 50, let's suppose, and you know that you will die someday. Now your health starts to deteriorate. Every day where you are living, you are thinking that maybe someday my time will come. Correct? Now you live on till 70 and nothing happens to you. But you have lived every day of those 20 years in fear that I might die someday. But if you died at the age of 50 itself, what is going to happen? You will not have those 20 years where you will be fearing death. So that is a very stupid kind of a narrative. That is a very warrior and let's go to war, battle, yes, type of a mindset. But that applies in situations like these. Life is very good, life is very cherishable. However you are, however you live, you should always be thankful to God about it. Brutus. Grant that, and then is death a benefit? And grant that, knowing that death is what? But a benefit. So are we Caesar's friends that have abridged his time of fearing death? To Romans stoop, let us bathe our hands in Caesar's blood up to the elbows and besmear our swords. Then walk we forth even to the marketplace and waving our red weapons over our heads, let's all cry, peace, freedom, liberty. So now Brutus makes a funny kind of a remark, meaning not funny basically, but he's trying to add some humor to it in a very obscure way. What is he saying? Are we Caesar's friend because we have abridged the time of Caesar fearing death? Basically, he's saying Caesar को मौत से डर लगता ही होगा. Correct? Now we have killed him. तो क्या एक तरीके से हमने सीजर की मदद करी है कि वी हैव किल्ड हिम और उसका जो मौत से डर का टाइम है वो कम हो गया. टू रोमन्स. नाउ एवरी रोमन जो उसके साथ खड़े हैं, द कॉन्स्पिरेटर्स, लेट अस बेथ आवर हैंड्स इन सीजर्स ब्लड. अब आओ झुको और अपने हाथ कोनियों तक सीजर के खून से लिपट लो, अप टू द एल्बोज एंड बिस्मियर आवर स्वॉर्ड्स, और अपनी जो चाकू और तलवारें हैं उन पे भी सीजर का खून मल लो. देन वॉक वी फॉर्थ, और फिर हम चलेंगे टू द मार्केट प्लेस एंड वेविंग आवर रेड वेपन्स ओवर आवर हेड्स, और अपने जो रेड वेपन्स हैं इनको जैसे ऐसे तलवार लेके नहीं निकल जाते हैं लोग चिल्लाते हुए, वैसे लेके चलेंगे. लेट अस ऑल क्राई पीस, फ्रीडम एंड लिबर्टी. कैसियस. स्टूपन देन वॉश, है ना. नाउ कैसियस इज सेइंग स्टूपन एंड देन वॉश योर हैंड्स. They smear their hands and swords with Caesar's blood. Now they do the same which is asked by Brutus. How many ages hence shall this our lofty city
acted over in states unborn and accents yet unknown. तो ये एक चीज आपके लिए बहुत फोर्थ वॉल ब्रेकिंग तरीके से दी गई है इसमें. कैसे? नाउ कैसियस इज सेइंग कब कहाँ कितने टाइम तक हमारे बारे में इस पे प्ले बनेगा और लोग इसको एक्ट करेंगे इन एक्सेंट्स अननोन और क्या चीज स्टेट्स अनबॉर्न जो सिटीज और कंट्रीज पैदा भी नहीं हुई हैं. तो दैट इज व्हाट कैसियस इज सेइंग. तो एक तरीके से ये बहुत ज्यादा आयरॉनिकल और फोर्थ वॉल ब्रेकिंग स्टेटमेंट है क्योंकि हम लोग भी इसको एनैक्ट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और इसका प्ले आज भी थिएटर में होता ही है. आफ्टर व्हाट 1000 years ऑफ सीजर बीइंग किल्ड and 400 years of this play being written. Brutus, how many times shall Caesar bleed in sport? How many times will Caesar bleed in sport? Because every time this play will be enacted, Caesar is going to die as a character. That now on Pompey's basis lies along no worthier than dust. So there is a statue of Pompey where Caesar's dead body is lying no worthier than dust. Caesar was such a man, and now his dead body, when it's lying at the feet of Pompey, it is not more worthier than dust. Cassius, so oft that shall be, so often shall that be. कितनी बार होगा ये? So often shall the not of us be called the men that gave their country liberty. So often कितनी बार हम लोगों को वो men बोला जाएगा that bought their country freedom and liberty. Decius, what shall be fourth? अब हम लोग क्या करना चाहिए पूछ रहा है डेसियस. कैसिस, ए एवरी मैन अवे ब्रूटस shall lead and we will grace his heels with the most boldest and best hearts of Rome. अब हम लोग क्या करेंगे? एवरी मैन अवे, हम लोग साथ चलते हैं. ब्रूटस विल लीड द वे एंड वी विल ग्रेस हिज हील एंड वी विल फॉलो बिहाइंड ब्रूटस with the most boldest hearts because they have killed Caesar right now, and the best hearts in Rome because they think they have done a very good service to Rome as a country itself. मैं साफ कर सकता हूं, ऐसे मैं कर लूं. अभी तक आपने देखा कि ये लोग बहुत ज्यादा अपने हैं. दे आर वेरी 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 हैप्पी कि हमने सीजर की जान ले ली है. mightiest raven they had in the country that has fallen at their hands. and यहां पे एक सर्वेंट आ रहा है, सर्वेंट मार्क एंटनी, और इसमें स्पेस बिल्कुल. ब्रूटस, soft, who comes here? A friend of Antony's? Servant of Mark Antony coming, and Brutus asking, who is here? A friend of Antony's. Thus Brutus, did my master bid me to? Servant started to kneel. Thus, yes, Brutus, and my master asked me to kneel in front of you. Thus did Mark Antony bid me fall down. And did Mark Antony also tell me to fall down at your feet? And being prostrate, prostrate meaning in a position of vulnerability in front of you. Thus he bade me say, Brutus is noble, wise, valiant, and honest. है ना? And thus he also bade me to say, Brutus honest, valiant, wise, and noble. यहीं से मार्क एंटनी की मैनिपुलेशन स्टार्ट हो गई है. Caesar was mighty, bold, royal, and loving. Caesar was what? Royal, bold, mighty, and loving. Say, I love Brutus and I honor him. He also has told him to say, I love Brutus and I honor him. Say, I feared Caesar, honored him, loved him. है ना? मैं सीजर से डरता. ओके, यहां पे चीजें ऐड इसने इस तरीके से करी हैं ताकि ऐसा लगे ब्रूटस को कि ब्रूटस कैन ओवरस्वे द माइंड ऑफ मार्क एंटनी. ओके, एंड लव्ड हिम. इफ ब्रूटस विल वाउच सेव फॉर save that Antony may safely come to him and be resolved. If Brutus will vouchsafe, if Brutus will say that Mark Antony will be safe and may be able to come safely and be resolved, be given answered, will be answered how Caesar had deserved to lie in death, how Caesar deserved to be killed and assassinated. Why did they do that? Mark Antony shall not love Caesar dead.
Mark Antony will not love Caesar further after he is dead. So we so well as Brutus living. So well जब तक ब्रूटस की जिंदगी है, मार्क एंटनी will not love Caesar dead, but will follow the fortunes and affairs of noble Brutus, but will start following noble Brutus and his fortunes and affairs. तो यहां पे मार्क एंटनी इज weaving his masterful manipulation to convince Brutus ki let me come and be resolved, answer my queries, and when you are able to do that, what will I do? I will be resolved and I will serve at the side of Brutus itself. I will not ask you more about Caesar and how you needed to kill him. I will be in servitude to you only. Julius Caesar, क्यों पढ़ रहा हूं मैं? Throughout the hazard of this untold state, with all true faith, so say my master Antony. Throughout the hazard, जो ये हुआ है, इसके throughout the hazard के बाद of this untrod state, untrod, unexplained और uncharted भी कह सकते हैं आप, with all true faith, with the sincerest of faith in Brutus, my master has bid me to say this. So says my master. Thy master is a wise and valiant Roman. हमारा मास्टर एक वाइज और वैलियंट रोमन है. I never thought him worse. मैंने उसको कभी इससे कम नहीं सोचा. Tell him so please him come unto this place. He shall be satisfied and by my honor depart untouched. Depart untouched meaning बिना किसी harm के he will leave this place and he will be satisfied meaning he will be answered. Previous उसमें देखा था कि how Brutus is very negligent of Antony. Why? Because he thinks Mark Antony is a very sporty man and he is not going to be able to do anything about the assassination of Caesar. Brutus was always the person who said we are not going to kill Antony because we need to make it seem surgical that we have only killed Caesar because ambition was needed to be eliminated. If we did kill Antony, it will seem more like a bloodshed and more like a call for war. So we cannot do that. However, Mark Antony is such an amazing individual that he is going to end up being the key figure who is going to take down Brutus and Cassius as well. You are already seeing how beautifully he has manipulated and he has trod into the depth of it very carefully because these men are very riled up. If you have killed the highest echelon in your country, you are not going to be somebody who is going to be cowarded or anyway held back at that moment in that same day. Right? And he is approaching them still. So that tells you how bold of a person he is. I'll fetch him presently, servant exits. And the servant exits while taking the word from Brutus that Mark Antony will not be touched. I know that we shall have him well to friend. मुझे ये चीज पता है कि if we can, then we shall have Mark Antony as a friend. I wish we may, but yet have a mind that fears him much. Now Cassius was always wary of Mark Antony, but yet I have a mind that fears him much. मेरा दिमाग अभी भी मार्क एंटनी से बहुत डरता है. And my misgivings still fall shrewdly to the purpose. And my misgivings, और मुझे अभी भी इंट्यूजन है कि वही मार्क एंटनी पे we will fall shrewdly to the purpose of Mark Antony. So that is what Cassius is trying to say. Now you can see that Cassius is always not in favor of Mark Antony and stirring him. But Brutus, being Brutus, not moved by it. But this is the most important mistake एक तरीके से Brutus की तरफ से, that he did not pay any attention to whom your beloved Mark Antony. Mic is working, yes. Brutus. But here comes Antony. Welcome Mark Antony. But ये देखो Mark Antony आ गया है. Welcome Mark Antony. O mighty Caesar, dost thou lie so low? Are all thy conquests, glories, triumphs, spoils shrunk to this little measure? Fare thee well, I know not, gentlemen, what you intend. Who else must be let blood
Who else is rank? If I myself there is no art so fit as Caesar that are, nor no instrument of of all that worth as those your swords made rich with the most noble blood of all this world. I do beseech you, if you bear me hard now, whilst your hand, purple hands door to reek and smoke, fulfill your pleasure and live 1,000 years. I shall not find myself so apt to die. No place will please so, no mean of death. Now, what is after seeing the body of Caesar, Mark Antony gets emotional. He's saying, "Oh Caesar, you lie so low. You were at the epitome of height, and now you are lying so low." Right? और all thy conquest, तुम्हारी सारी conquest, glories, triumphs, spoils जो तुम लेके आए थे, shrunk to this little measure, इस तरीके से. Fare thee well. I fare you well. I know not gentlemen. मुझे नहीं पता है जेंटलमैन व्हाट यू इंटेंड, क्या तुम्हारा इंटेंशन है और किसका खून बहना है. हु एल्स इज रैंक, हु एल्स इज ऑन द लिस्ट. इफ आई माई सेल्फ, अगर मैं हूं, देर इज नो आर सो फिट, कोई आर फिट नहीं है एज ऑफ राइट नाउ एज सीजर्स डेथ आर. जिस घंटे पे सीजर की हत्या हुई है उस घंटे से बेहतर घंटा है ही नहीं मुझे मारने के लिए. नॉर नो इंस्ट्रूमेंट, ना ही कोई इंस्ट्रूमेंट जो सीजर की मौत के लिए यूज हुआ है उसके अलावा. ऑफ ऑल ऑफ हाफ दैट वर्थ has those your swords made, and of half that worth has those your swords have made. मतलब तुम्हारी जो swords ने वर्थ ली है सीजर के खून के साथ, मैं उसकी आधी वर्थ का हूं, बट मेरे को भी उसी तलवार से मार दो. मुझे नहीं, अगर क्या कहते हैं मारना है तो इसी टाइम मार दो, मुझे नहीं जीना है आगे. With the most noble blood of all this world, with the most noble blood of all this world, I do beseech you, I do plead to you, if you bear me hard, if you have anything against me, now whilst your purple hands do reek and smoke, they are still reeking and smoking, they are still hungry for blood. Fulfill your pleasure, अपना प्लेजर फुलफिल कर लो. लिव 1,000 years, उसके बाद 1,000 साल जीना. आई शॉल नॉट फाइंड माई सेल्फ सो एप्ट टू डाई. मेरी मौत का मुझे और कोई इतना एप्ट टाइम नहीं मिल रहा है टू डाई. नो प्लेस विल प्लीज मी सो, नो मीन्स ऑफ डेथ, कोई जगह मुझे प्लीज नहीं करेगी और कोई मीन्स ऑफ डेथ मुझे प्लीज नहीं करेगी. मारना है अभी मार के खत्म कर दो. As hereby Caesar and by your cut off, the choice and master spirits of this age, Brutus, O Antony, beg not your death of us, though now we must appear bloody and cruel, as by our hands, and this our present act you see we do, yet see you but our hands, and this the bleeding business they have done. Our hearts you see not, they are pitiful, and pity to the general wrong of Rome, as fire drives out fire, so pity, pity. Had done this deed on Caesar, for your part to you our swords have leaden points. Mark Antony arms in strength of malice and hearts of brothers' temper, to receive you in with all kind love, good thoughts, and reverence. So Mark Antony says, as hereby Caesar and by you cut off, मरे हुए और सीजर के बगल में लेटे हुए, द चॉइस एंड मास्टर स्पिरिट्स ऑफ दिस एज. तो ये मेरी चॉइस है अपनी मास्टरफुल स्पिरिट ऑफ दिस एज की, है ना. ब्रूटस इज सेइंग, ओ एंटनी, बेग नॉट यू योर डेथ ऑफ अस, अपनी मौत के लिए हमसे भीख मत मांगो. तो नाउ वी मस्ट अपीयर ब्लडी एंड क्रूअल. अभी तुमको हमारी जिस तरीके से हमारी दशा है देख के लग रहा होगा कि वी आर वेरी ब्लडी एंड क्रूअल, बट एज बाय आवर हैंड्स एंड दिस आवर प्रेजेंट एक्ट, और हमारे हाथ और हमारे प्रेजेंट एक्ट को देख के भी ये लग रहा है, यू सी वी डू, वी आर ब्लडी एंड क्रूअल. Yet see you but our hands and this the bleeding business they have done. But तुमको हमारे हाथ दिख रहे हैं और जो हमारा ब्लीडिंग बिजनेस है, ओनली दैट यू कैन सी. जो हम लोगों ने एक्ट किया है अभी तुम वो देख पा रहे हो, बट हमारे हार्ट्स को तुम नहीं देख पा रहे हो. Our hearts you see not, they are pitiful, they are
वेरी मच इन पिटी, बहुत लज्जा में है, एंड पिटी टू द जनरल रॉन्ग ऑफ रोम, और हम लोग जनरल रॉन्ग जो रोम के साथ हुआ है बाय सीजर बीइंग एम्बिशियस, उस पे भी बहुत पिटिफुल है। एज फायर ड्राइव्स आउट फायर, जैसे आग आग को निकालती है, वैसे ही पिटी पिटी को काटती है। हैड डन दिस डीड टू ऑन सीजर, पिटी ने ही ये डीड सीजर के साथ करी है। फॉर योर पार्ट मार्क एंटनी, टू आर swords have leaden points, our blades are blunt, they are dull, our blades do not have sharpness for you Mark Antony, our arms in strength of malice, हमारे arms which are in a lot of strength of malice, and our hearts of brothers temper, हमारे हाथ तुमको देख के लग रहा होगा they have strength and malice, बट हमारे जो दिल हैं उनमें भाइयों का व्यवहार है। टू रिसीव यू इन विथ ऑल काइंड ऑफ लव, विथ ऑल काइंड लव, तो हम तुमको एज लव के साथ रिसीव कर रहे हैं, प्यार से रिसीव कर रहे हैं, गुड थॉट्स, अच्छे थॉट्स के साथ रिसीव कर रहे हैं, एंड रिवरेंस मीनिंग रिस्पेक्ट के साथ रिसीव कर रहे हैं। कैसियस, योर वॉइस शैल बी एज स्ट्रॉन्ग एज एनी मैन इन डिस्पोजिंग ऑफ न्यू डिग्निटीज, तुम्हारी जो वॉइस है इट विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग इन डिस्पोजिंग न्यू डिग्निटीज, डिसाइडिंग द पोजिशंस ऑफ पावर इन रोम, तुम्हारी आवाज उतनी इंपॉर्टेंट होगी जितनी हमारी होगी। तो आप ये सब देख सकते हैं इतने बढ़िया तरीके से मैनिपुलेशन यहां पे चल रही है। They are very much scared of Mark Antony, but if they will have Mark Antony on their bad side, Mark Antony will take them down, and वही होगा भी। Mark Antony very 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 important the coming up. I have a lot of love for Mark Antony personally, but मुझे ब्रूटस एज अ कैरेक्टर बहुत बढ़िया लगता है। I do not like Mark Antony. I hate Mark Antony basically, but I love hating Mark Antony. I was very much on the side of the conspirators, but I also loved Caesar personally. But Mark Antony, दो तरीके की manipulation, I hate that. How good he can be, how good can doing that. But फिर वही चीज आती है that you have to respect it as well in a way. तो वही चीज है मेरे साथ। Mark Antony, I do not like him as a individual, but I like him as a character, and I like him in the way that what he has helped bring out in this play. Yes. Your voice shall be as strong, ये मैंने बता दिया। Brutus, only be patient till we have appeased the multitude besides themselves with fear, and then we will deliver the cause why I that did love Caesar when I struck him have thus proceeded. Only be patient till when? Till we have appeased to the multitude, to the city, the general public of Rome, besides themselves with fear, के दिल में अभी बहुत डर है, and then we will deliver you the cause, फिर हम तुमको पूरा कॉज समझा देंगे। Why I that did love Caesar, मैं जिसने सीजर को बहुत प्यार किया उसने सीजर के साथ ये चीज करी। Have thus proceeded. Antony, I doubt not of your wisdom, let each man render me his bloody hand. मैं तुमको बिल्कुल डाउट नहीं करता हूं। I do not doubt your freedom. Let each man render me his bloody hand. Each of you let me shake your hand. First Marcus Brutus will I shake with you. Marcus का हैंड मिलाया। नेक्स्ट Caius Cassius का हाथ मिलाया। Decius Brutus का हाथ मिलाया। फिर Metellus, फिर Cinna, फिर कैस्का, माई वैलियंट कैस्का, बिकॉज फर्स्ट स्ट्राइकर पहला आदमी था जिसने सीजर पे हमला किया। तो लास्ट नॉट लीस्ट इन लव योर्स गुड ट्रेबोनियस का लास्ट में हाथ मिला है। जेंटलमैन ऑल अलास व्हाट शैल आई से, माई क्रेडिट नाउ स्टैंड्स ऑन सच स्लिपरी ग्राउंड दैट वन ऑफ टू बैड वेज यू मस्ट कंसीड मी। मैं क्या ही बोलूं जेंटलमैन, my credibility stands on very slippery ground that one of two bad ways you must concede me. एक में से दो में से एक तरीके से तुम मुझे concede करोगे, you will take me either a coward or a flatterer, या तो तुम मुझे एज अ कावर्ड लोगे या तो मुझे एज अ फ्लैटरर समझो।
coward because one who cannot avenge his friend, flatterer, talking good to you after you have killed his friend. That I did love thee, Caesar, oh, this true. If then thy spirit look upon us now, shall it not grieve thee dearer than thy death? See thy Antony making his peace, shaking the bloody fingers of thy foe, most noble in the presence of thy corpse. Had I as many eyes as thou hast wounds, weeping as fast as they stream forth thy blood, it would become me better than to close in terms of friendship with thine enemies. Pardon me, Julius. Here was thou brave heart. तो व्हाट इज ही सेइंग? मैं सीजर को यस मैं प्यार करता था, ये सच बात है, बट अगर सीजर की आत्मा ऊपर से देखेगी तो वो बहुत ग्रीफ करेगी। क्यों करेगी? कि उसका दोस्त मार्क एंटनी उसके असैसिनेटर से हाथ मिला रहा है, टेकिंग द ब्लडी फिंगर्स ऑफ द फो, जबकि सीजर का खून उनके हाथ पे अभी भी लगा हुआ है। मोस्ट नोबल इन द प्रेजेंस ऑफ द कॉर्प्स, उसकी लाश पड़ी हुई है वहां पे और फिर भी वो उसके असैसिनेटर से हाथ मिला रहा है। Had I as many eyes as thou hast wound, जितने तुम्हारे स्टैब वुंड्स हैं, अगर मेरे पास उतनी आंखें होती और उनमें से आंसू निकल रहे होते जैसे कि तुम्हारा खून बह रहा है, इट वुड बिकम मी बेटर देन टू क्लोज, इट वुड बिकम बेटर देन मी टू क्लोज, मीनिंग इन टर्म्स ऑफ फ्रेंडशिप। अब तुम्हारे असैसिनेटर्स के साथ दोस्ती करने से इट वुड बिकम मी बेटर एज अ फ्रेंड with thine enemies, तुम्हारे enemies हैं। Pardon me, Julius, please forgive me, Julius. Here was thou bade, here was thou killed, brave heart, brave soul. Basically, you can see how bold of a character Mark Antony himself is. He is standing in front of the assassinators with blade still out, but he is able to convey what he wants to say to Caesar's corpse. And and he is able to make his peace while they are looking at him. Here didst thou fall, and here thy hunter stand, signed in thy spoil and crimson in thy lead. O world, thou wast the forest to this heart, and this indeed, O world, the heart of thee. How like a deer stricken by many princes dost thou here lie. हाँ, यहाँ पे तुम फॉल मतलब हियर डिड फॉल हियर, यू डिड डाई हियर, ये तुम्हारे हंटर्स हैं, दीज आर द पीपल हु हैव किल्ड यू, साइंड इन द स्पॉइल एंड क्रिम्सन इन द लीड, मीनिंग ब्लड, साइंड मतलब कवर्ड इन योर ब्लड। ओ वर्ल्ड, दाउ वास्ट द फॉरेस्ट टू दिस हार्ट, तुम एक जंगल थे दुनिया इस छोटे से दिल के लिए, एंड दिस इंडीड ओ वर्ल्ड द हार्ट ऑफ दी, और पूरी दुनिया तुम इस छोटे से दिल में समाई हुई थी। द पर्सन वॉन्टेड टू कैप्चर इट ऑल। हाउ लाइक अ डियर स्ट्रकन बाय मेनी प्रिंसेस, यू आर लाइंग लाइक अ डियर हु वाज स्ट्रकन बाय मेनी प्रिंसेस। Cassius now shouts, Mark Antony. Mark Antony standing in front of him and talking like this. So if this will happen, you are on the assassinator side, somebody is talking to the corpse like this, you will ask him, hey, what's wrong? Are you all right? Are you still on our side? Are you sure? That is what Cassius is doing. Antony, pardon me, Caius Cassius, the enemies of Caesar shall say this, then in a friend in it is in its cold modesty. Pardon me, Caius Cassius, सीजर के दुश्मन भी ये सब चीजें बोलेंगे, देन इन अ फ्रेंड इन कोल्ड मॉडेस्टी, मीनिंग मॉडेस्टली बोल रहा है, बट इट इज कोल्ड बिकॉज ही इज साइडिंग विद द असैसिनेटर्स। आई ब्लेम यू नॉट फॉर प्रेजिंग सीजर, सो मैं तुमको बिल्कुल ब्लेम नहीं करूंगा सीजर को प्रेस करने के लिए, बट व्हाट कॉम्पैक्ट मीन यू टू हैव विद अस, तुम व्हाट कॉम्पैक्ट मीन व्हाट इंटेंशंस यू हैव विद अस, तुम्हारे क्या इंटेंशन है हम लोगों के लिए। विल यू बी प्रिक्ड इन द नंबर्स ऑफ आवर फ्रेंड्स और शैल वी ऑन एंड नॉट डिपेंड ऑन यू, विल यू बी पिक्ड इन द नंबर ऑफ आवर फ्रेंड्स और शैल वी नॉट गो ऑन एंड डिपेंड ऑन यू एनी मोर। That is what Cassius is asking. Cassius is being very straight to the point. Are you on our side or are you not on our side? We should depend on you or we should not depend on you. That is what Cassius is trying to say. Antony.
Therefore I took your hands but was indeed swayed from the point by looking down on Caesar. मैंने इसीलिए तुम्हारे हाथ मिलाए थे, but was indeed swayed from the point by looking at this dead body. Friends, am I with you all and love you all? I am with you all and I love you all upon this hope that you shall give me reason. Upon there is this hope कि ये reasons दोगे. Why did you kill Caesar and why and wherein was Caesar dangerous? Brutus, or else were this a savage spectacle. कहने लगा ब्रूटस कि हाँ वो तो देना ही हमको, कि अदरवाइज इट वुड बी व्हाट, अ सैवेज स्पेक्टिकल, अ स्पेक्टिकल विच इज वेरी ब्रूटल एंड वेरी ग्रूसम. अगर रीजन नहीं होगा सीजर को मारने के पीछे, देन दीज पीपल आर जनरली वेरी 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 रॉन्ग. ठीक है, so that is what this is saying. Our reasons are so full of good regard that were you Antony the son of Caesar, you should be satisfied. So now Brutus is saying it would be a savage spectacle if we killed Caesar without any cause or reason that were justified enough that such a man of standing, such a politician, such a military general should be killed, who got so much tributaries and helped Rome grow into the city and empire it was at that time. So Brutus is trying to convince Antony to do what? To believe him that the reasons were so good that even if Antony was the son of Caesar, even if Mark Antony was the son of Caesar, he would be satisfied, he would be answered, and he would be satisfied with those answers. Antony, that's all I seek. Antony says, that's all I seek, and am moreover suitor that I may produce his body to the marketplace and in the pulpit as becomes a friend, speak in the order of his funeral. Or he requests one thing more, कि suitor that I may, I plead in a way, yes, I plead that I may produce his body to the marketplace. I request you all, I request the conspirators to allow me to produce the body, meaning introduce the dead body of Caesar into the marketplace, meaning common public. And in the pulpit where he is going to address the commoners as becomes a friend, as becoming a friend of Caesar, as I am such a friend of Caesar, speak in the order of his funeral. Speak about him and his death in the order of his funeral, meaning उसके funeral में एक last speech as a friend of Caesar मुझे मिलनी चाहिए. Brutus, you shall mark Antony. And Brutus allows this. This is the biggest mistake that Brutus is going to make in this entire play. Cassius is still very, very skeptical of Mark Antony. Take that in mind. Cassius, Brutus, a word with you. So if a question arises, कि how do you justify that Cassius was very much skeptical or was not in favor of Mark Antony, then you can use all of this. You can praise this. You can use this like this in your answers and then explain it. Go about it explaining it. Brutus, a word with you, aside to Brutus. Now he takes Brutus to the side and says, you know not what you do. तुमको नहीं पता है what you are doing. Do not consent that Antony speak in his funeral. Know you how much the people may be moved by that which he will utter. Please do not consent to this. Please do not agree with Mark Antony speaking in the funeral of Julius Caesar. That Antony speak in his funeral. Know you how much the people may be moved by that which he will utter. क्या भी जो भी मार्क एंटनी बोलने वाला है उससे लोगों पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है. मे बी इट कैन बी नेगेटिव, मे बी इट कैन बी पॉजिटिव, बट वी डू नॉट नो दैट. और ये चीज हमको अलाउ नहीं करनी चाहिए बिकॉज मार्क एंटनी कैन बी वेरी डेंजरस फॉर देम. और द सेम अप्लाइज एक्ट 2 में आपको पता भी चलेगा, सॉरी एक्ट 2 कह रहा हूं, सीन 2 में पता भी चलेगा कि द सेम हैपेंस. कैसियस वाज ऑलवेज against Antony and his premonitions came very true. Brutus was not very in a sense careful about Mark Antony and he was very overconfident and that led to the downfall of the conspirators. Brutus aside to Cassius, by your pardon I will myself into the pulpit first and show the reason of our Caesar's death.
what Alcini shall speak, I will protest. He speaks by leave and by permission. So Brutus says aside to Cassius, by your pardon, by your permission, I will myself in the pulpit first. I will speak first into the pulpit and show the reasons of Caesar's death. Why we have killed Caesar, I will show the reasons first. What Antony shall speak, I will protest. जो भी मार्क एंटनी बोलने वाला है, I will protest. I will tell the commoners that he speaks by leave and by permission, that we have allowed Mark Antony to speak into the pulpit and we have given him permission, and that we are contended Caesar shall have all true rights and lawful ceremonies. Now he's saying कि I will make it in a way that it was a very surgical move that we underwent. Whatever Mark Antony will say, पहले मैं बात करने जाऊंगा. I will say he speaks by our permission. He is not speaking by his own accord. We have permitted Mark Antony to speak. So हमारा level of power ऊंचा हो जाएगा. हमारा औहदा अगर ऊंचा हो जाएगा तो Mark Antony whatever he will say will be protested by what Brutus will say. ठीक है. If he is coming and speaking from the permission of Brutus, so his standing will be on a very slippery ground as Mark Antony said himself. ठीक है, पहली चीज. एंड हम लोग अपने आप को विलेनस दिखाएंगे नहीं by saying we will give all rights and lawful ceremonies to Caesar because he was such a great asset to Rome. Correct? But why did they have to kill him? Because Caesar was growing way too ambitious. That is the reason that they will pursue in the common public. So that is the plan of Marcus Brutus. But it is not going to pan out really well for them. कैसे पता चलेगा अभी बताता हूं. It shall advantage us more than do us wrong. It will be more advantageous that we allow a friend of Caesar to speak in the funeral. That will give us more leeway and leverage that we are allowing the people close to Caesar to speak in his funeral. We are not savages, we are not beasts, we are some people who wanted to do good for Rome. That is how they are trying to portray it. Cassius aside to Brutus, I know not what may fall, I like it not. Cassius is still not sure about it. Cassius was never sure about Mark Antony speaking in the funeral of Caesar. Mark Antony here, take you Caesar's body. Mark Antony, take Caesar's body. You shall not in your funeral speech blame us, but speak all good you can devise of Caesar, and say you do it by our permission, else shall you not have any hand at all about his funeral. And you shall speak in the same pulpit whereto I am going, after my speech is ended. So these are the stipulations Brutus has risen. What are the stipulations? You cannot blame us for anything. You will not say that we are wrong. Pehla stipulation. But speak all good you can devise of Caesar. You may speak all good that you want to speak about Caesar. And तीसरा stipulation ये भी बोलना है कि you are doing all of this by our permission. Else you should not have any hand at all about Caesar's funeral. Otherwise अगर ये नहीं करना है तुमको तो तुमको बोलने का कोई अधिकार हम नहीं देंगे सीजर के फ्यूनरल में. And you shall speak in the same pulpit where Brutus is going to give his speech. This is the fourth stipulation. 4 stipulations ये मैंने क्यों लिस्ट करवाया है. अगले सीन में जब मार्क एंटनी की स्पीच आएगी विच इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, तो आपको समझ में आएगा कि हाउ मास्टरफुली डिड मार्क एंटनी पोर्ट्रे एंड surgically made his speech in a way that he abided by all 4 stipulations but still convinced the people of Rome to get against Brutus and all the conspirators. Antony, I do desire no more. Mark Antony says, this is all fine, I do desire no more. Prepare the body then and follow us. Prepare the body को prepare करो Caesar की and follow us. Oh, pardon me, thou bleeding piece of earth, that I am meek and gentle with these butchers. Pardon me, Caesar, that thou bleeding piece of earth. This is a monologue by
Mark Antony to Caesar's dead body. This is very important. This shows what Mark Antony's actual mindset is. Whatever he has been doing till now, however he has been portraying himself with the conspirators, is what is basically a play. It is basically a conundrum that he is in, and this is basically something that he has to do in order for him to convince the people of Rome. So let's dive into this. मार्क एंटनी का जो भी मेंटल यहाँ पे माइंडसेट है वो उसके बारे में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर आंसर राइटिंग. प्लीज 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 स्टार्ट टेकिंग नोट्स हियर, अगर अभी तक स्टार्ट नहीं किया है आप लोगों ने. ओके, लेट्स बिगिन. हाँ, तो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था that I am meek and gentle with these butchers. I am meek, I am basically very weak, and I am very gentle with these butchers who have killed you, people who have murdered you. Thou bleeding piece of earth refers to the Caesar's dead body. Thou art the ruins of the noblest man. Thou art the dead body is the ruins, is the leftover husk, the corpse of the noblest man that existed, that ever lived in the tides of time. So the person who ever lived in the tide of times, the noblest person, it is the dead body of that man. Woe to the hands that shed this costly blood. Woe meaning hatred. Hatred to the hands that shed this costly blood. Over thy wounds now do I prophesy. Over thy wounds, तुम्हारे खून और तुम्हारे जख्मों के ऊपर मैं एक प्रोफेसी कर रहा हूं. I am making a vow right now, which like dumb mouths do open their ruby lips, which like dumb mouths do open their ruby lips, meaning the dumb mouths which open their lips to beg the voice and utterance of my tongue. जो भी शब्द मेरे मुंह से निकलने वाले हैं वो क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा वाइल होने वाले हैं. इट इज गोइंग टू बी वेरी डिस्गस्टिंग. अ कर्स शैल लाइट अपॉन द लिम्स ऑफ मेन. अ कर्स shall light upon the limbs of men, domestic fury and fierce civil strife. Now what he's saying, domestic fury and fierce civil strife, meaning there will be a lot of war waged and a lot of civil strife. Civil strife meaning यहाँ पे civil war से है. So basically he is saying a curse shall light upon the limbs of men. आदमियों के हाथों पैरों में एक ऐसा कर्स आएगा जिससे सिविल स्ट्राइफ बहुत कॉमन हो जाएगा, मीनिंग दे विल फाइट ईच अदर. ठीक है. शैल कंबर ऑल द पार्ट्स ऑफ इटली. शैल इनकलकेट ऑल द पार्ट्स ऑफ इटली. पूरे इटली में ये क्या कहते हैं होने वाला है. एंड इट विल इनगल्फ द एंटायर कंट्री. ब्लड एंड डिस्ट्रक्शन शैल बी सो इन यूज. यहाँ पे ब्लड और डिस्ट्रक्शन ऐसे होगा, शैल बी सो मच इन यूज. इट विल बी वेरी कॉमन. इट विल बी लाइक एवरी स्ट्रीट ऑफ रोम विल हैव पीपल मर्डरिंग ईच अदर, एंड इट विल बी वेरी कॉमन. एंड dreadful objects of familiar that mothers shall but smile when they behold their infants quartered with the hands of war. So what he's saying, and dreadful objects so familiar, dreadful objects such as weapons, such as armory, such as all of those things that mothers, even mothers, when they are holding their infants which have been what, they have been quartered, meaning एक बच्चा है छोटा, उसको आप ले लीजिए और उसको 4 parts में divide कर दीजिए. Even if the mother is holding that child in that state, she will but smile, because war, destruction and tyranny will be so in use कि mother को भी ओके मेरे बच्चे की क्या कहते हैं डेड बॉडी तो कम से कम मिल गई टाइप फील आएगा कि even if the infant is in that state, the mother will be happy. Correct? That is what Mark Antony is saying. This is a very, very, very gruesome part of this play. All pity choked with custom of fell deeds. जितनी भी पिटी होगी लोगों के अंदर वो चोक हो जाएगी किससे, फेल डीड्स के कस्टम से. एंड सीजर स्पिरिट रेंजिंग फॉर रिवेंज.
जो सीजर की स्पिरिट आसमान में रिवेंज के लिए तड़प रही है, विथ एड बाय हिज साइड कम हॉट फ्रॉम हेल। तो क्या कह रहे हैं, एट उसके, एट इज अ माइथोलॉजिकल क्रीचर, उसके साइड पे है, विच हैज कम स्ट्रेट फ्रॉम हेल, शैल इन दिस कन्फाइंस विद देम विथ एम मोनार्क्स वॉइस क्राई हैवक। तो एट की जो बीइंग है वो क्या करेगी, आफ्टर सीइंग दिस डिस्ट्रक्शन विद द मोनार्क्स वॉइस, बिकॉज एट इज अ मोनार्क इटसेल्फ फ्रॉम हेल, and it will also cry havoc after seeing the such destruction। तो समझिए वो कहना ये चाह रहा है कि a deity, a monarch of hell will be shocked even after seeing this not miracle but this state of people, shall in these confines with them cry havoc and let slip the dogs of war। And what he will do, he will let loose of what, the dogs of war, that his foul deed shall smell above the earth with carrion men groaning for burial। That his foul deed shall smell above the earth, जो उसकी फाउल डीड्स हैं, दे विल स्मेल ऑल अबव द अर्थ विथ कैरियन मेन ग्रोनिंग फॉर बरियल। कैरियन मीनिंग वीक मैन जो होंगे, यहां पे जितने भी वीक मैन होंगे, दे विल बी डूइंग व्हाट, दे विल बी क्राइंग फॉर बरियल, कि प्लीज बरी अस, वी डू नॉट वांट टू लिव एनी मोर आफ्टर सीइंग द स्टेट ऑफ द सिटी, after seeing such vile and vigorous level of tyranny and war and destruction, they will but what, they will want to just end themselves and they will want what, कि प्लीज हमको गाड़ दो। और इसी तरीके से मार्क एंटनी इज प्लानिंग टू एक्साइट रिवेंज ऑफ सीजर। ये ऑक्टेवियस का सर्वेंट नाउ एंटर्स द सीन। ऑक्टेवियस इज हुम, द अडॉप्टेड सन ऑफ सीजर, द नेफ्यू ऑफ सीजर, को ऑगस्टस सीजर के नाम से भी जाना जाता है। You serve Octavius Caesar, do you not, servant? I do, Mark Antony। So he asks the servant, you do serve Octavius Caesar, right? He says, yes। Caesar did write for him to come to Rome। Caesar ने लिखा था Octavius को कि he should come to Rome। He did receive his letters and is coming। Yes, Octavius ने उसके letters receive किए and he is coming to Rome। तो Octavius Caesar is coming to Rome now। अब यहां पे मार्क एंटनी की वन ऑफ द मोर ब्रिलियंट थिंग्स दैट ही डज इन दिस प्ले, वो भी दिखाने वाले हैं। पहली चीज, अब आपको मैंने ज्यादा उस पे क्या कहते हैं फोकस नहीं किया, जो पैराग्राफ है उससे हमको मार्क एंटनी का स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ माइंडसेट पता चलता है। कैसा है वो स्टेट ऑफ माइंडसेट, कैसा है वो स्टेट ऑफ बीइंग। इट इज वेरी 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 मच टच्ड एंड इट इज वेरी 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 मच in what? It is very much in decay and it is very much longing for revenge। Now what he has pursued or what he has portrayed in front of those men was very good। It was very meek and gentle, as he said, right? You can use that as a keyword in your answers, but in actuality he's raging for revenge। In actuality he is bloodthirsty। In actuality he wants to wage war with these men, but he cannot do that right now because the public of Rome is in utter dismay and the public of Rome is not united। If he wants to take upon these men, he needs a united front from the people of Rome। So how will he do that? He will do that by the speech that he gives in the pulpit। So he knows what he's going to do in that pulpit। That's why this paragraph that you have read right now is there। He knows how he needs to manipulate the people of Rome into believing him। Manipulate is a strong word। Basically Mark Antony will just show the truth of what the actual things were। Because Caesar was murdered because of Cassius's jealousy, people like Brutus will also suffer who were manipulated by Cassius that Caesar was growing too ambitious। ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस टाइज। आप एक चीज देखोगे कि इस प्ले में एवरी वर्ड हैज 4 मीनिंग्स एंड दोस 4 मीनिंग्स टाई टुगेदर एंड मेक अ लार्जर मीनिंग दैट कैरीज द थीम ऑफ द प्ले। So that is what the brilliance of Shakespeare's writing is।
and bid me say to you by word of mouth, O Caesar. And he says he has told me to say that by word of mouth. And then he sees the dead body of Caesar and he cries, Oh Caesar. He was not in the knowns that Caesar was murdered because he just entered Rome. And then he sees the dead body lying there of Caesar and he cries, Oh Caesar, Caesar is dead right there. Thy heart is big. Get thee apart and weep. Your heart is big. Your heart is full of emotions right now. Get thee apart and weep. Break down and weep for Caesar. Passion I see is catching for mine eyes. Passion meaning tears is catching your eyes and my eyes as well. Seeing those beads of sorrow stand in thine. Beads of sorrow meaning tears. Began to water is thy master coming. तुम्हारी आंखों में मुझे आंसू दिख रहे हैं. If you want to cry, go ahead and do that. I will not question you. You must cry. And I am seeing that passion, the love for Caesar that you have is coming through the tears that are there in your eyes. Is thy master coming? क्या तुम्हारा master Octavius Caesar is coming here. He lies tonight within 7 leagues of Rome. He is 7 leagues far away from Rome. Post back with speed and tell him what had chance. Here is a morning Rome, a dangerous Rome, no Rome of safety for Octavius yet. Hie hence and tell him so, yet stay a while. Thou shalt not back till I have borne this corpse into the marketplace. There shall I try in my oration how the people take the cruel issue of these bloody men, according to which thou shalt discourse to young Octavius the state of things. So what he's saying, post back with speed. जल्द से जल्द ऑक्टेवियस सीजर के पास जाओ and tell him what has happened here. Here is a mourning Rome. Rome is mourning. What is Rome mourning? The death of Caesar. A dangerous Rome. Rome is dangerous because there is so much of dismay and there is so much of civil, not strife बोलेंगे, but you will say civil discourse and civil कोल्ड वॉर बेसिकली आप कह सकते हो. और क्या कहते हैं, सिविलियंस बहुत हे वायर हैं अभी. एवरीबडी इज इन अ वेरी ट्रबल्ड स्टेट ऑफ माइंड. नो रोम ऑफ सेफ्टी फॉर ऑक्टेवियस बिकॉज द कॉन्स्पिरेटर्स आर लूज. So Octavius, if he returns, it is not safe for him. Hie hence and tell him so. Hie hence, go fast and tell him so. Yet, रुको, अभी कुछ थोड़ी देर रुको. Thou shalt not back till I have borne this corpse into the marketplace. अभी जब तक मैं इस कॉर्प्स को लेके मार्केट प्लेस में नहीं जा रहा हूं तब तक वापस मत जाओ. इन माई ओरेशन हाउ द पीपल टेक द क्रूएल इश्यू ऑफ दीज ब्लडी मैन अकॉर्डिंग टू विच दाउ शैल डिस्कोर्स. देयर शैल आई ट्राई. वहां पे मैं क्या करूंगा? आई विल ट्राई हाउ द पीपल टेक द क्रूएल इश्यू ऑफ दीज ब्लडी मैन. मीनिंग आई विल ट्राई टू चेंज द पब्लिक ओपिनियन अबाउट सीजर्स असैसिनेशन in my oration, meaning in my speech that I will be giving in the pulpit. I will try to change public opinion to actually know what has chanced and actually basically actually start to understand that how bad things are and what these people have actually done. Okay. How the people take the cruel issue of these bloody men, according to which thou shalt discourse to young Octavius the state of things, lend me your hand. So what he is saying कि तो फिर उसके बाद ऑक्टेवियस के पास जाके सारी चीजें बताना कि हाउ आई हैव सक्सीडेड और नॉट, व्हाट आर द थिंग्स ऑफ रोम, व्हाट आर द स्टेट ऑफ रोम, and how people are taking this assassination. Then only you should leave and you should tell this to Octavius Caesar. And then he asks him to lend his hand to bring the body into the pulpit. अब यहाँ पे सीन खत्म हो जाता है. आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा. एंड दैट वी हैव कम टू द एंड ऑफ द वीडियो. मैं कुछ चीज़ें बताने के बाद ही वीडियो एंड करूँगा. पहली चीज़, यहाँ पे हमको बहुत सी चीज़ें पता चली. पहली चीज़ यहाँ पे how people of Rome were actually, some people of Rome were in knowns that Caesar was going to be killed, but they were in favor of that. ठीक है. दूसरी चीज यहाँ पे जब सीजर का मर्डर हुआ तो हमको पता चला why Metellus Cimber is against Caesar, because Publius Cimber, his brother, has been banished. तो इसलिए Publius Cimber की banishment पे, because he was a loyal servant or a loyal person to whom, Pompey,
को निकाल दिया गया था, ठीक है। तो उस पे मेटिलिसिम्बर वाज एंग्री, कैसियस वाज जेलस, ब्रूटस वाज मैनिपुलेटेड, द रेस्ट ऑफ द रोमन्स थॉट दैट सीजर वाज ग्रोइंग टू फास्ट एंड ही नीडेड टू फ्लाई एन ऑर्डिनरी पिच, इसीलिए उसका मर्डर किया गया। आफ्टर द मर्डर ऑफ सीजर they were shouting, they were happy, but Mark Antony was one of the greatest friends of Caesar. तो सीजर की मौत देख के मार्क एंटनी was taken very lightly by Brutus. Cassius was very, very, very cautious of him, but Brutus penultimately became the ringleader of these men. So whatever he said was followed. ठीक है. Now Cassius was actually very केयरफुल ऑफ मार्क एंटनी, बट ब्रूटस के बाद वो उसको ओवरराइड नहीं कर पाया। तो एक्चुअली मार्क एंटनी ने क्या किया कि ब्रूटस को अपने फेवर में लिया, फेवर में लेने के बाद ही डिड नॉट रिवील अ सिंगल आउंस ऑफ हिज एक्चुअल मोटिव टू देम। जब ये नहीं हुआ तो मार्क एंटनी को परमिशन मिल गई है बोलने की पलपट में। अब वो बोलने जाएगा, वहां पे वो इन लोगों को गलत ठहराएगा। कैसे ठहराएगा वो आपको देखना है, वो अगले सीन में देखेंगे। लेकिन वो जिस ब्यूटीफुल मास्टरफुल मैनिपुलेशन के साथ अपनी स्पीच बोलेगा, इट इज सेड टू बी वन ऑफ द बेस्ट स्पीचेस रिटन एवर इन लिटरेचर, जिस तरीके से मार्क एंटनी कन्विंस करने वाला है, ठीक है। और यहां पे हम क्या देखते हैं, इनर मोनोलॉग ऑफ मार्क एंटनी, जिससे हमको पता चलता है द एक्चुअल मेंटल स्टेट ऑफ मार्क एंटनी, जो कि बहुत ट्रबल्ड है, जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में है अबाउट द असैसिनेशन ऑफ जूलियस सीजर, ठीक है। विद दैट, थैंक यू एवरीबॉडी। बहुत गंदा लिखा है, थैंक। अगर कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो फिर ये 2 नंबर्स मैं दे रहा हूं, आप इन पे कॉल कर सकते हो और अपने डाउट्स फटाफट क्लियर कर सकते हो। आई होप समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है और कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप रीच आउट कर सकते हो कमेंट्स में, या फिर ये 2 नंबर्स हैं, आराम से आप कॉल करो, अपना डाउट क्लियर करो। और मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, और ऐसे ही हम लोग पूरा अच्छे से मजे मजे में खत्म कर